हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल। एक बार फिर से आ गया मैं आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। आज दोबारा से वही दिन है और दोबारा से वही आपका फेवरेट शो है नो योर फैकल्टी। हर बार हम हर एक डिपार्टमेंट से, एक स्कूल से एक फैकल्टी को लेकर आते हैं आपके पास, उनसे चंद सवालात करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनकी ज़िंदगी के अनछुए पहलुओं के बारे में जानते हैं और भी बेहतर तरीके से उनके बारे में हमें और ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। आज एक ऐसी शख्सियत है मेरे पास जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा, जिनका नाम है डॉक्टर चंचल बेरवानी, जो कि हैं स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री से। वहाँ पर वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उनके बारे में कुछ बातें आपको बताता हूँ सवालात करने से पहले। डॉक्टर चंचल बेरवानी completed her BDS and MDS from D.Y. Patil University, Pune, and joined Dr. D.Y. Patil University School of Dentistry in 2010. She is a dedicated educator and keen academician with numerous academic accolades in her name. She is also a full-time mother, expertly juggling the responsibilities of family and career while gracefully balancing her passion for dance and cultural activities. Let's meet the superwoman Dr. Chanchal Beerwani. Ma'am, good morning. कैसे हैं आप? और आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ. How are you? I'm fine, thank you. How are you? Thank you for calling me here. Okay, great. Tell us about your journey here at D.Y. Patil University. When did you start working here and how have you evolved as a teacher and human being? मेरी शुरुआत हुई थी 2010 में। जैसे ही मेरा MDS खत्म हुआ, बाय गॉड्स ग्रेस उसी साल मुझे यहाँ एज अ लेक्चरर, एज अ फैकल्टी आई जॉइंड हियर। इवॉल्व्ड अगर पूछेंगे तो टीचिंग वाज ऑलवेज माय पैशन, सो दैट इज हाउ आई केम हियर। एंड ऐसा था कि BDS होके हमको टीचर प्रोफेशन नहीं मिलेगा, तो उसके लिए MDS करना पड़ता है। तो MDS कर लिया। MDS करने के बाद यहाँ ज्वाइन कर लिया एंड दिस इज हाउ आई लैंडेड हियर. इट्स बीन 13 years नाउ हियर इन दिस कॉलेज. Oh my God, especially it's a long journey. Yes. Yes, absolutely long journey. And the students have changed as the technologies have been changing. We've been learning so much from the students. उनका passion, हमारा passion, so they'll make us always feel young at heart. तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, which is why this D.Y. Patil has made me a little more young at heart, even though it's been 13 years. I feel I'm still back in 2010 by heart. Even actually it looks like that, especially you are younger. Thank you so much. Okay, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो हमें आपकी जर्नी के बारे में और बहुत भी ज्यादा बातें बताएगा. What made you choose the field of dental care? How did you prepare yourself for this since school and college days? Frankly speaking, dentistry जो थी वो मेरी फर्स्ट चॉइस नहीं थी. Okay. I always wanted to be a doctor क्योंकि हमारी फैमिली में कोई नहीं था. I'm the first one. Well, now it's interesting story now. तो MBBS मिला नहीं, so the second choice that was left for us was dentistry. But now I don't regret. I think dentistry is the best choice for a woman who's been able to handle everything, responsibility unique wise. Yeah, like you said, juggling between family, career, activities, dance, career, everything. So that is how I took dentistry. How did I come here and what made me prepare in my school days? देखिए हमारे टाइम पे ऐसा था नहीं. We never had these entrance NEET. We were the first batch to have AMU PMDC that time. NEET वगैरह था नहीं. Engineering में it was our PCM marks. So I've gone through engineering for 6 months. तब तक मिला नहीं था because I had not got a seat in medical. After juggling again, I say for engineering seat, I got through engineering 3 months वहाँ थी. Then I got into dentistry and I left engineering and I came and there's never again a look back. So in school and college ऐसा था कि कुछ करना है साइंस में. So we never prepared. It is just that we studied. It actually happened with you. Yeah, it just happened with me. Great, especially the dentistry field was made for you. It's like that. Okay, going further, Dr. Vijay Patil sir is an inspiration for all of us. How has he motivated you? I'm sure actually you have met with him. Abhi, yeah, definitely. See, Vijay sir always follows a theory and he always tells that never leave your passion. So his passion towards cricket and education, like he says, has come from his dad. Oh yes. So his passion for cricket and the things he loves has been till today the same that he had couple of years or few years back. So that is how he has motivated that the passion of me into dentistry is only because I like teaching. I'm a practitioner in the evening as well. But I have not left teaching because I'm continuing this motivation and which has, handled me
so that new students come. Yes, yes. उनके जो इंटरेस्ट हैं वो न्यू है, तो yes. उनके इंटरेस्ट के साथ अपना इंटरेस्ट भी उस तरह से हो जाना, एंड टू रिमेन एज वी वर यंग, नए ट्रेंड्स, नए टेक्निक्स के साथ टच में रहना. It keeps motivating. Exactly. So you are in touch. So this motivation is definitely from our, you call the whole and soul Vijay sir, who has told us that never leave it. Should always be in thriving for something that will lead you to see the vision. So being he is a visionary, उनको देख के हमारा भी फ्यूचर, हमारा भी विजन वैसे ही बनता रहेगा. Oh yes. So all nice. thanks to him. Oh, great. Nicely said, ma'am. In light of recent advancement in dental technology and practices, how is your faculty preparing the next generation of dentists to stay abreast of these developments and deliver the best possible care to patients? देखा जाए तो our college अभी तो NAC accredited हुआ है, Oh, yes. A++. सो आई विल से हमारे कॉलेज में सारे एडवांस प्रोसीजर्स हैं, फेलोशिप्स चालू हुए हैं. सो फ्रॉम माइनर एडवांसमेंट जो आजकल होते हैं जैसे CBCT स्कैन्स टू माइक्रोस्कोप्स, एवरीथिंग दिस कॉलेज हैज़, जिसके वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जब निकलते हैं तो उनको कैसे होता है, दे आर नॉट लर्निंग ओनली बेसिक, but they are learning all the technologies that are there today when they go out as dentist. Be it आप स्कैन ले लो, लेजर ले लो, Yes. माइक्रोस्कोप्स ले लो, ये जो सारी चीजें हम बाहर, हमारे the टाइम पे वो upcoming था नहीं. technologies, yes. When we were students, this the college never had. This college has everything from start to end. तो हमको कैसे बाहर जाके कोर्सेज करने पड़ रहे थे. Oh, yes. Now this college in every department has some advanced technology which the student can start learning from internship itself. So this college is not only providing at a master's level, even when you are an intern, you get to see, observe and develop interest and do masters and get your interest in whichever field you want. And उनको आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें मास्टर्स डिग्री करके you have all the possible newer technologies हमारे कॉलेज में जो आप सीख सकते हैं. Yes. Okay. And even if you don't want to do masters, we have almost कितने 6-7 fellowships which are in advanced technologies where you come, you learn, you gain knowledge, you do whatever you want and achieve it. Achieve it. Yes. Yeah. Nice. Okay. Oral health has a significant impact on overall well-being. Could you share some insights on the link between oral health and systemic health and how your faculty is contributing to the promotion of this understanding in both the medical and the dental communities? Okay, this is a very sensitive topic and very, I think, a good platform जहाँ हम ये बात कर सकेंगे. अभी आप सोचिए, आप यहाँ बैठे हैं और आपके कोई पहचान वाले चलते चलते गिर गए, उनको हार्ट अटैक आ गया, और हम देख रहे हैं कि there is no other symptom and he has not been visiting dentist for a couple of months for his oral cleaning and his mouth is dirty. Okay. आपके कोई नोन है जिनको डायबिटीज है, जो सारी मेडिकेशन ले रहे हैं बट उनका डायबिटीज कभी कंट्रोल में ही नहीं है, बिकॉज उनका जो ओरल हेल्थ है इज नॉट अप टू द मार्क. आप एक प्रेग्नेंट वुमन के पास हो एंड शी इज नॉट कीपिंग हर ओरल हाइजीन वेल एंड सडनली पता चलता है शी इज इनटू प्री टर्म बर्थ वेट. So these are all the things that dentistry oral health is linked, जिसके proven studies भी हैं. So हमारी तरफ से हम always ये बोलते हैं कि if your oral health is fine, then your systemic health is fine. Oh, yes. जैसे हम बोलते हैं a small curve which is a smile can change everything. Oh yes. And oral health with your regular follow up to your dentist for normal cleaning. अगर आप normal cleaning करवाने जाओगे तो बाकी सब चीज़ें भी मिलेंगी. Your diabetes is in check. Your cardiac is in check. The pregnant lady का preterm low birth weight और preterm birth would be in check. So ये सारी जो चीज़ें हैं, respiratory, आप बोलेंगे अस्थमा, COPD, they are all linked to oral health. तो अगर आपने वो संभाल लिया तो आपने पूरी हेल्थ संभाली. ऐसे बोलते हैं ना कि मुंह से जाते ही पेट में सारा ये हो जाता है. तो that is the first area where you have to keep things properly. Oh wow, nicely explained, ma'am. Okay, going further. Access to dental care remains a concern for many communities, especially in remote or underserved areas. How does your faculty address this issue, and what steps are being taken to ensure that quality dental services are available to all the individuals, regardless
of their geographic location of socio-economic status? हमारे यहाँ पे ना पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है Nice, जो yes. जो क्या करता है, वी हैव अ डेंटल वैन. So we have satellite centers. We have in Nairoli, we have in Panvel, we have in Mankhurd, where we take all our staff and students there. Do visit there जहाँ पे especially. विजिट करते हैं रिमोट एरियाज में. कैंप्स होता है, डेंटल कैंप्स, फ्री कैंप्स, वेयर दे डोंट नो, सो दे गो, दे एजुकेट, दे गिव लेक्चर्स, Oh, दे yes. इन्फॉर्म देम. सो ये सब चीज़ें जो है वो हमारे यहाँ पे रिमोट एरियाज में जाके हो जाती हैं. So that is how these people who are in remote areas, in village areas, are being educated by this community, where dental van also goes. तो minor procedures भी वहीं हो जाते हैं. अच्छा, अब मैं इसके अंदर एक सवाल आपसे खुद से पूछूंगा, वो ये है जो अक्सर लोगों के दिमाग में एक मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम बादाम की छाल से ब्रश करेंगे, मंजन कर लेंगे, जो गांव में रूरल एरिया में चलता है, वो दूर होना बहुत जरूरी है कि भाई दांत चमक जाएंगे. हम कोयला यूज कर लेंगे, दांत चमक जाएंगे. हम तंबाकू का मंजन यूज करेंगे, दांत चमक जाएंगे. हम नमक को यूज करेंगे सरसों के तेल के साथ, तो बहुत फायदा होगा. सो प्लीज टेल अस अबाउट दिस मिसकंसेप्शन और मिथ. क्या ये मिथ है, मिसकंसेप्शन है? आप प्लीज इसको क्लैरिटी दो जिससे लोगों को पता चले और वो एजुकेट हों. See, with due respect to हमारे ancestors, तभी यहाँ सब एजुकेशन वो सब नहीं था, तो जो अवेलेबल था वो उससे उनसे करते थे, उनसे उनको रिजल्ट भी मिलता था. रिजल्ट मिल जाएगा, बट उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है ना, वो बहुत ही हानिकारक है. Yes, because जैसे you're आप taking सॉल्ट, nicotine. करेक्ट, आप सॉल्ट से करोगे, आप चारकोल से करोगे, आपके दांत जो है ना घस रहे हैं, बिकॉज उसमें अब्रेसिव्स हैं. Yes, yes. सो व्हाट इज हैपनिंग इज, जो पहली वाली परत होती है दांतों पे, द फर्स्ट लेयर, Yeah. दैट गेट्स वोन ऑफ. फिर धीरे धीरे सेंसिटिविटी होना, पीला कलर आना, बिकॉज द सेकेंड लेयर दैट इज देयर ऑन द टूथ इज येलो कलर. सो उसके वजह से क्या हो जाएगा ना, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये सब चीजें यूज करने के, वो बहुत सारी हो जाती हैं. Yes. So, see, I will not say that they don't let your teeth get cleaned. They will clean, but they will cause more harmful effects. That is why nowadays even tooth powders are being not made. They are banned. Yes. Not banned, but they are not being produced or generated. इसीलिए paste है, which is soft. इसीलिए brush है, which is soft, medium and hard. According to your tooth type, when you visit your dentist, toothpaste and toothbrush are the ideal methods of cleaning your tooth. बिकॉज उससे ना अब्रेसिव्स आते हैं, ना आपके दांत छिलते हैं, ना वहाँ पे सेंसिटिविटी होती है, और ना और कोई परेशानी होती है जो बाकी चीजों से होती है. One more question with the Listerine mouthwash or something like that, the mouthwash जो कि अब स्पेशली इसके लिए YouTube पर भी बात हो रही है कि ये एक तरह के स्कैम जैसा भी कुछ होता है कि लोगों को भ्रमित करने के लिए होता है. So actually do we really need to do that, especially every time? Not every time, twice a day. एनी माउथ वॉश दैट यू आर कंफर्टेबल विथ. किसी किसी को अगर कॉन्सेंट्रेटेड माउथ वॉश लिया तो अल्सर्स आ जाते हैं. डू इट 1:1. पानी डालो जितना, उतना माउथ वॉश डालो. यू हैव टू यूज ट्वाइस. बैड ब्रेथ, जो भी खाना फंसा हुआ होता है, माउथ वॉश के जो कंटेंट्स हैं उसमें यूजफुल हो जाते हैं. बट सी टू इट कि जब आप ब्रश करते हैं उसके इमीडिएटली बाद माउथ वॉश नहीं करना होता है, क्योंकि पेस्ट के कंटेंट और माउथ वॉश के कंटेंट अगर मिल जाएंगे तो उनका असर खत्म हो जाएगा. आफ्टर टूथपेस्ट, व्हेन यू डू इन द मॉर्निंग, यू हैव योर ब्रेकफास्ट. आफ्टर ब्रेकफास्ट यू डू माउथ वॉश. ओके, नॉट इमीडिएटली. और रात को जब आप सोने के पहले, सबसे लास्ट थिंग शुड बी योर माउथ वॉश. तो 2 बार आप ये कर लेंगे ना, तो उसके इफेक्ट्स जो है विल इंक्रीज 10 टाइम्स देन यू डूइंग इट इमीडिएटली आफ्टर ब्रशिंग. Oh yes, तो just do that way. Thank you for educating us, मैम. स्पेशली काफी सारे लोगों को अब ये बात पता चलेगी कैसे यूज करना है माउथ वॉश और पेस्ट को. ओके, अब फील्ड के तरह आपके बारे में भी कुछ चीजें जानता हूँ और आपसे पूछता हूँ. What makes our institution unique? I mean, of course, it's a faculty like us, definitely. But what about the factors such as the infrastructure, cafeteria, lab and research facilities, the varied courses and the general environment of learning and fun? देखिए, ये ऐसा होता है ना कि हम बोलेंगे तो मुंह मियां मिट्ठू, वैसा मुंह नहीं. मियां. कोई आएगा वो खुद ही देख लेगा, बट इफ यू कम, इट इज लाइक अ स्टेट ऑफ आर्ट. लेकिन स्पेशली हम लोग होते कॉन्फिडेंट तो है, तो तेरी तारीफ तो अपनी करेंगे. क्योंकि यू सी द न्यू बिल्डिंग दैट हैज come up, it is the excellent start that has happened. We have stadium here, we have dental college with all the possible new equipments, medical college, I mean you name it and we have it. So there is nothing that is left, and what is unique is DY Patil. I think name is only unique. You go anywhere. No, the name is a brand. Yeah, absolutely, I agree with you. Okay.
What is the greatest lesson you learned from your students? To be young at heart. That actually you are. Okay, but that's great. Actually, that's also for me. I'm learning it. If you had not been a professor, you would be A dancer. a dancer. Okay. इसके बारे में ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, दोबारा नो योर डिपार्टमेंट में जो मैम को बुलाएंगे, इनसे काफी ज्यादा बातें जानेंगे डांस के बारे में, म्यूजिक के बारे में. Okay. How do you juggle your hobbies with your career? Yeah, that is a challenging question. Superwoman. So I manage it. That's why especially you are calling yourself the superwoman, the क्या word. करूँ? This is how You we have have to to manage. So full time dentist, full time professor, full time mom, तो वो तो manage होना ही है. होना ही है. Okay. So there was especially the insights and some general questions. Now I'm going for our famous rapid fire round. I think you're ready for that. Okay. 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 So quickly we are starting. Best advice you got in your career? To be positive always. The happiest moment of your life? When I became the mother. Beautiful. The saddest moment of your life? ऐसा कोई specific moment तो नहीं है. No, I हाँ, don't खास think नहीं so. है. I don't remember ऐसा. Okay. Wow, nice. The challenging moment of your life? After my maternity leave, the challenging moment was to decide to leave my 1-year-old or 6-month-old son Okay. and come back to work. Oh, great. And then after that, every day is a challenge. Every Especially. day is a challenge. Okay. Your favorite actor? Shah Rukh Khan. My favorite especially. We are common here. Favorite book? The Secret. The Secret by Rhonda Byrne. Nice book. Okay. Favorite movie? दिल वाले दुल्हनिया ले जाए. DDLJ. Favorite food? वड़ा पाव. Vada pav. Okay. Favorite holiday destination? गोवा. Goa. Okay, great. So that was the rapid fire round, and now I'm going for the insights. An idea that changed your life. See, I follow Secret, Magic, and Yes. all these books of Especially the power. power. So I have always learned that when you know the secret, magic Manifest. happens Yes. and you get the power of what you want. That I believe. I agree, totally agree with you. Especially, I've actually used that, the law of attraction. Okay. How has success changed you? And now, if I will say this, since we are big cricket fan, now Virat Kohli just said, no, Yes. success doesn't change anything. It is the failure that teaches you. Always, actually, I believe in And the that. failure always makes you a little more humble. So I feel success doesn't change anything. It is the The failure failure. So especially that I feel teaches you you. should be as humble as you can. And even then, especially if you want to learn something from that Exactly, failure. Okay, exactly. I need to learn. I did not do Exactly. that. You have to be down to earth. Oh yes. Oh yes. What hurt you the most? Hypocrisy. Same here. That's a common thing. But क्या करें, लेकिन nowadays actually we are seeing it everywhere. Yeah. Okay. The best role of your life, that is an important question. Mother, daughter, wife or teacher? I think mother, because then it encompasses everything. Oh yes. Mother. Complete. Yeah. Okay. So there was the insights round, and now we are going for our this or that round. I think you're ready for that. I'm giving you the options. Veg or non-veg? Non-veg. Non-veg. Okay. Tea or coffee? Tea. Gym or yoga? I'm not in both, but But the yoga dancer. preferred. Dance. Dance. Great. Early riser or night owl? Night owl. Okay. Emotional or practical? Very emotional. Okay. Books or Kindle? Books. Mountains or beaches? Definitely beaches. Okay. Now that's why actually you love Goa. Religious or spiritual? Very religious, little spiritual. Okay. Library or classroom? Classroom. Amazon Prime और Netflix? Both. बहुत especially मतलब डिपेंड करता है कंटेंट के ऊपर जहाँ जो अच्छा मिल जी, गया. बिल्कुल. ओके. गेम ऑफ थ्रोन्स और हाउस ऑफ कार्ड? सच बताऊं तो दोनों नहीं देखा. अच्छी बात है, आप कुछ और देख रहे होंगे ना. समथिंग लाइक दैट. सो देयर वर स्पेशली द नो योर फैकल्टी विद डॉक्टर चंचल, जिन्होंने हमें काफी सारी चीजें बताई हैं, आप लोगों को एजुकेट किया, और बहुत अच्छा सेशन रहा आज उनके साथ. जितना क्रिस्प रहा उससे भी ज्यादा एजुकेटिंग भी रहा, और बहुत ज्यादा अच्छी बातें भी हुई, और उतना रूबरू भी वाला रहा जिसमें काफी ज्यादा इंट्रोडक्शन भी हुआ. तो दोबारा हम लोग आज आपसे मिलेंगे 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो पर. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू.